and I welcome you all in 5 years of GST, industry-specific analysis on hotels, restaurants, and hospitals, which are organized by CIRC of ICAI. I welcome C. Virendra Parwal, sir, chief guest of the session, Shilpi Khandelwal, ma'am, speaker of the session, C. Atul Mehrotra, sir, chairman of CIRC, and all members of council present here. By extending this session, I request to see Atul Mehrotra, sir, to please deliver the welcome address. Please, sir. Thank you, Abhilasha, the moderator of today's VCM, and the learned speaker, Shilpi Khandelwal ji, my friend, my younger brother, with our council, Rajiv Gupta ji, Anil Yadav ji, Sikasa chairman, my seniors in the profession, friends, boys and girls. Very good afternoon to all of you. Though it's not easy to have some learnings on Sunday afternoon, but I am sure that our members who have joined or who are still joining will be benefited from today's VCM, which is on a specific topic on hotel, restaurant, and hospital. Though GST has completed 5 years, but still there are a lot of issues which we are regularly discussing and have some scope for the discussion. There is always a scope for the discussion on the specific issues and problems faced by our business houses and business persons and our clients as well. So, learned speaker is there. She will be deliberating on the topic. Before that, we all know that we celebrate the CA Day on 1st July. So all the branches and all the members are excited to celebrate the CA Day. And this is going to be some celebrated in a different manner because our government, our ICI, and we all celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav as well, of 75 completion of the 75 years of our independence. So few things I just wanted to share with all of you, that our CIRC is an entire team is trying to serve our members and students in a better manner. Every person tries to justify his or her post chair. So we are also trying to serve our members in a better manner, and our team is so dedicated that we are having 75 programs for 75 days just to celebrate the independence of our country. So you all are requested to participate in that and share your ideas. Also participate either as a speaker or moderator or in any other manner, whether it is a physical or virtual. Further, since our speaker is a female speaker, our moderator is a female speaker, a female member of our family, and we all know that Women on Wednesday is being launched by CIRC last year, and we are very successfully managing the WOW series, where our female members are managing very well. The speaker, moderator, session chairman, and even vote of thanks all being done by our female members. So I also request all the female members to share this concept of our CIRC with more and more female members so that they may also participate in our WOW series. As we know that there is a very mega program which is being organized at Mumbai from 18th November to 21st November, and that is World Congress of Accountants, and that is being hosted by our ICI India. India is having this opportunity in the first time after 118 years of this membership. So I request all of the members, though there is both the options are there, either physical or virtual, but physical
I am of the opinion that we should physically join that program, because a lot of members from different countries will be there. What is going to be happen in our profession, what will be the future of our profession, and how we can visualize a bigger picture of our profession in the coming years, so that we will be having much more confidence regarding our profession. Profession is changing, change is a natural process, and we are also under this process. We are already having so much tough time, because the people are, all members are saying that GST audit is gone and this gone, bank audit is not easy now. So what will be the future of our profession? We have to visualize, we have to learn मुझे कैसे आगे प्रैक्टिस में बढ़ना है, अगर वी आर इन द प्रैक्टिस, स्पेशली फॉर द प्रैक्टिसिंग मेंबर्स, बिकॉज कैसे वो बड़ी पिक्चर हमको दिखाई देगी. That is why I am again and again and during each and every program I request our members to join that bigger the mega event of our profession, and we can say that that is the Olympics of our professional learning. So with these words, I congratulate our CIRC team, and I offer these small activities which have been launched or started by the CIRC, and especially for the female members. And I welcome all of you, and I am thankful to the speaker for giving and the moderator as well for giving me this opportunity to have few words with all of you. Thank you. Thank you. Thank you. Over to the moderator of Abhilasha. Thank you, sir. Thank you so much for your motivational words. So now I am profoundly delighted to take an opportunity to introduce the chief guest today, CA Virendra Parwal, sir. Sir is a practicing chartered accountant having experience of 25 years in field of direct taxes and indirect taxes. He has been a key speaker in various seminars, residential refresher courses at national and international levels. Sir has been chairman of Indirect Tax Committee of Tax Consultant Association Jaipur, member of Indirect Tax Committee of ICAI New Delhi, and nominated as a trainer for GST by ITDC of ICAI New Delhi. Sir, I request you to please address the session by your compendious words. Please, sir. Thank you so much, CA Abhilasha. Is it audible? Yes, sir, you are audible. Yeah. Thank you so much. And I am very much pleasure and thankful and honored to be a keynote speaker, come chief guest on this Sunday evening on the program of this organized by CIRC of the Institute of Accountants of India, celebrating 5 years of GST on GST Ki Pathshala under the aegis of Azadi Ka Amrit Mahotsav. I am very much thankful to entire CIRC team, especially to our own CIRC members from Jaipur, Mr. Anil Kumar Yadav and Akash Badgoti. I'm not able to see him on the screen. And also thankful to the Secretary Lokesh Maheshwari, CIRC, who has provided this opportunity to address this audience on this particular seminar as a keynote speaker. The topic, I think, which is kept for today's discussion or deliberation is hotel, restaurant, and hospital. I don't know how hospital has become part with the hotel and restaurant, and how it is so important that it is to be discussed along with hotel and restaurant. Hotel and restaurant, you are feeling good, but when you see the name of the hospital,
I think perhaps there is some motto behind this. आप अच्छे से एंजॉय करिए, खाइए पिए, होटल में घूमिए, और अगर कुछ हो जाए तो हॉस्पिटल तो है ही है. Then you are treated well and you are care well. So anyway, this is a good topic which has been chosen for the today's discussion and deliberation. And the speaker, CA Sylvie Khandelwal, I offer him all the best for this Thank you, sir. session. Let me take 2-3 important aspects with respect to this particular topic, and then CA Sylvie will take us through all these issues which are coming in day-to-day life related to hotel, restaurant, and of course hospital. As we all are the chartered accountants and professionals and do know that in GST, the composite supply of food as a restaurant has been treated as a supply of services. In Schedule 2, it has been treated as a supply of services. So there was a long battle whether it is a supply of goods or supply of services before the GST. But in GST, they have tried to settle it down that it would be treated as a supply of services. Still, there are certain riders, and those riders are very important. What are those riders? Those riders can be with respect to the location of the restaurant, where the restaurant is located, whether it is located in a specified premises, and specified premises is defined, which is a premises providing hotel accommodation, where 7,500 rupees per day per unit or above. So whether the restaurant is located in that premises or the restaurant is located in some other premises makes difference. And that difference is with reference to the rate. If it is located in a specified premises, the higher rate, 18%, of course, with ITC. But if it is located other than a specified premises, then the token rate of 5%, of course, without ITC. So these are certain riders. And when you put some conditions or some riders with respect to some entry, there always comes some issues which you can boil down or which are required for the purpose of discussions. The issues can be with respect to the classification. The issues can be with respect to the location. Classification, very thin line of difference between the supply of goods and supply of services. Though restaurant services, where the goods are supplied along with services, which are part of the services, has been treated as a services. But what would happen when a sweet shop selling the sweets, jalebi, over the counter, and there is a facility to consume the jalebi and the snacks over the with certain fruits or certain jellies or whatever it is. So some part of element of services and major part is of supply of foods. And I am aware there are certain double ARs on this particular issues. I think Sylvie would take us all through double ARs and all the issues where the classification issues has been dealt with. One typical example or situation which is coming to my mind. Supply of in a restaurant. Suppose a guest comes in a restaurant and he sits in a restaurant and from the menu card, he orders for some tobacco items to be consumed at that restaurant. And the restaurant people serves the tobacco to that particular guest in a restaurant. What is it? Is it a supply of service or is it a supply of goods? Or it is a mixed supply of goods of
tobacco and supply of service, what is it? Composite, mixed. If it is a mixed, then tobacco rate is 28%. Restaurant is 5%. So it's a very, very huge difference which is coming in based on certain specific things with respect to that entry. So there are certain issues. I think as a keynote speaker, I have only to flag those, and the eminent speaker would take care for all these issues. So far as hospital is concerned, I'm telling a very small story, and let us. I would ask a speaker to deliberate the various aspects which is coming out of that story with respect to the hospital. Assume Mr. A is traveling in a car with his dog. And why I'm saying dog, I have certain intentions behind it. Unfortunately, the car met with the accident at the outskirts of the city. The local people rang up for the emergency services and called ambulance on the spot to carry the victims to the nearby hospital. There are certain elements of services which is inbuilt in this story. After carrying to the hospital, certain necessary tests and checkups and investigations were done by the doctors and their team, administering the person along with supplying with necessary drugs and surgeries. Due to accident, Mr. A suffered a heavy blood loss. He also suffered certain impacted on the spinal cord and back. So when there is a blood loss, blood has been sourced by the blood bank. A was also faced certain tissue burned. So he was treated with a plastic surgery to restore the facial tissues. After spending a week in the hospital, Mr. A got discharged. Post-discharge also, there were certain problems, certain issues which Mr. A was facing in his back and the joints. And therefore, he was he has joined to the yoga center for the issues which he is facing in his back. I also told at the beginning that in a car there was a dog, and the dog also suffered certain injuries in the accident. It was treated in a veterinary clinic and was able to survive. Now in this small story, there are certain issues which needs to be deliberated with respect to the hospital. The services related to the ambulance by an external entity to the victim, admission given, test, checkup, investigations undertaken, treatment procedures performed, medicine, drugs applied, inpatient services like accommodation, diet, nursing. We all are aware nowadays hospital is like a hotel. Their accommodation service, food, their nursing staff, all those are like you would love to have a 5-star feeling in the hospital. Then sourcing of blood, treatment given by the yoga center, treatment provided to the dog. So all these have to be examined with respect to the livability of the hospital. Inpatient services, of course, to the inpatient services, I remember there is a certain circular where they say that the room which is provided to the inpatient services, the room rent is part of the healthcare services. The diet supplied, the food supplied is a part of the healthcare services, but it is only restricted to the patient, not to the attendant. What would happen if the attendant consumed that food from that canteen? Then I think perhaps it would be a different scenario. What would happen to a medical store which is in the premises of the hospital, and from that medical store, whatever drugs supplied to the inpatient is okay. Some person walk over to the hospital and takes drugs, purchase drugs and went out to the hospital, not consuming the drugs in that particular hospital. What would happen to that transaction, whether it is a supply of service or supply of foods? So
I think there are certain issues, certain AARs are also there, certain judgments are also there, certain clarifications are also there. And in GST, I'm sure nothing is final. It's everything is under trial, though it is a 5 years of the GST, but still we are learning, and therefore it is a well thought topic, GST ki Pathshala, under the aegis of the Azadi Ka Amrit Mahotsav celebration. I give my all the best to our speaker Sylvie, and I'm thankful to all the CIRC team to provide me this opportunity to be a keynote speaker on this Sunday evening on this topic, hotel, restaurant, and hospital. Thank you very much. Thank you so much, sir, for accepting our invitation and sharing your so much valuable knowledge with us. So today we have a very energetic and enthusiastic speaker, CA Shilvi Khandelwal. Ma'am is a practicing chartered accountant, engaged in internal control, tax planning, GST implementation, and business consultancy for various hotels and resorts. She is writing articles in field of taxation and finance for India's best publication house in taxation, like Taxman, Tax Guru, CA Club India, etc. Ma'am is also a GST faculty in various seminars and workshops held by GST Department, business associations, ICAI, and various groups or various CA groups. Ma'am, I request you to please light up this session by your wealth of knowledge. Please, ma'am. Thank you. Thank you, CIRC. Thank you, Anil sir. Thank you, Parwal sir. Actually, आपने डिस्क्राइब कर दिया है कि क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं, बट जीएसटी इज आल्सो इन ए ट्रायल फेज आफ्टर द 5 years of implementation. So now we start our session. I am sharing my PPT. PPT शो हो रही है क्या? Yes, ma'am. Okay. Actually, our today's topic is GST industry specific analysis on GST on hotel, restaurants, and hospitals. Now we can start it with the hospitality industry as a whole. What is the hospitality industry? Hospitality industry is a broad category of field which includes services like lodging. Lodging is like accommodation services, food and drink services, food and beverages, supply services, event planning. Just like we plan some events like conferences and all, theme parks, and travel and tourism. It includes hotel, tourism agency, restaurants, cafes, bar, etc. इम्पैक्ट क्या रहा हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री का जीएसटी आने के बाद, और जीएसटी से पहले क्या थी हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री? हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में हम मेजर सर्विसेज क्या कवर करते हैं? होटल अकोमोडेशन सर्विसेज, food and beverages services like restaurants, cafes, bars, etc. Outdoor catering, tour operator, and other services which hotels provide, just like foreign exchange, rent a cab, tour operator, etc. ये जीएसटी टैक्सेशन हिस्ट्री हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में रही है कि वहां पर मल्टीपल टैक्सेशन था, कैस्केडिंग इफेक्ट था,
मल्टीपल टैक्सेशन इज लाइक होटल्स के लिए, हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज के लिए बहुत सारे टैक्सेस थे, लाइक सर्विस टैक्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी कर रही थी, एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी कर रही थी, कस्टम ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी कर रही थी, वैट, लग्जरी टैक्सेस, एंटरटेनमेंट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी जो स्टेट गवर्नमेंट लेवी करती थी। लेकिन आफ्टर जीएसटी ये सब सम हो गया है और टैक्सेस बहुत कम हो गया है, लाइक सर्विस टैक्स, वैट, लग्जरी टैक्स, एक्साइज, एंटरटेनमेंट ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी बाय द स्टेट गवर्नमेंट, वो सब सम होकर, एक्साइज ड्यूटी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट सम होकर हमारा जीएसटी आ गया है, जस्ट लाइक दिस। स्टेट टैक्सेस कौन कौन से थे? वैट था हमारा प्री जीएसटी हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री पे, लग्जरी टैक्स था, एंटरटेनमेंट टैक्स था और एक्साइज ड्यूटी था। सेम सेंट्रल टैक्सेस में हमारे पास सर्विस टैक्स था, एक्साइज ड्यूटी था और कस्टम ड्यूटी था। जब हम पोस्ट जीएसटी सिनेरियो देखते हैं तो हमारे पास सिर्फ जीएसटी रहा, वैट, कस्टम ड्यूटी एंड एक्साइज ड्यूटी ऑन लिकर। मेजरली जो टैक्सेस हमारे हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में थे वो 3 टैक्सेस थे। कौन कौन से? जनरली 3 टैक्सेस आर लेविड, दिस इज वैट, लग्जरी टैक्स बाय द स्टेट्स एंड स्टेट सर्विस टैक्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जीएसटी की जो सर्विस टैक्स में जो रेट थी पहले प्रिवेल करती थी हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में, दैट वाज 15% ऑफ सर्विस टैक्स इंक्लूडिंग 2 सेसेस, स्वच्छ भारत सेस एंड कृषि कल्याण सेस। लेकिन सर्विस टैक्स 15% के साथ वहां पे कुछ नोटिफिकेशंस के थ्रू अबेटमेंट भी अलाउड था। जस्ट लाइक होटल अकोमोडेशन पे 60% वैल्यू पे टैक्स लगता था, 40% अबेटमेंट वैल्यू थी। F&B में अगर हम रेस्टोरेंट में जाएंगे तो 40% पे टैक्स लगता था, 60% अबेटमेंट अलाउड था। और जहां पर बैंक्वेट, कैंटीन, मंडप सर्विसेज होती थी वहां पर 70% वैल्यू पे टैक्स लगता था, 30% अबेटमेंट अलाउड था। जहां पर नॉन एसी रेस्टोरेंट्स थे वहां पर सर्विस टैक्स लेविएबल नहीं था। वैट वाज लेविड, वैट की जो हिस्ट्री है उसमें कैस्केडिंग इफेक्ट कैसे आता था कि वैट की वैल्यू में, वैट की जो टैक्सेबल वैल्यू कैलकुलेट की जाती थी, वैट का टर्नओवर जो होता था उसमें सर्विस टैक्स भी इंक्लूड होता था। दैट मींस सर्विस टैक्स के पार्ट पर भी वैट कंपोनेंट लगता था, लेकिन वैट जो कंपोनेंट, सर्विस टैक्स वैट कंपोनेंट पे लेवी नहीं होता था। सेम होटल इंडस्ट्री में जब रूम्स पे बात करेंगे हम, रूम का जो अकोमोडेशन सर्विसेज होती है उस पर एक सर्विस टैक्स लगता था, लग्जरी टैक्स भी लगता था। अकॉर्डिंग टू द दिस इज द टैक्स लेविएबल बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो हर स्टेट में अलग होता था। लाइक राजस्थान वी हैड 10% और 8% ऑफ लग्जरी टैक्स रेट्स। कुछ हेरिटेज होटल्स में एग्जाम था। Same hotel was subjected to only for service tax on various other services. हाँ, उस टाइमिंग पे जब हमारे पास सर्विस टैक्स एंड वैट दोनों होते थे तो सर्विस कंपोनेंट पे सर्विस टैक्स एप्लीकेबल था, गुड्स कंपोनेंट पे हमारे वैट एप्लीकेबल था। तो जो अदर सर्विसेज होटल्स देते थे लाइक हेल्थ क्लब, स्पा, स्विमिंग पूल, ड्राई क्लीनिंग एंड बिजली सपोर्ट सर्विसेज, उन सब पे ओनली सर्विस टैक्स एप्लीकेबल था, नॉट वैट। हमारे यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज है उसमें मॉन्यूमेंट्स, इवेंट्स और अट्रैक्शंस भी होते हैं, उन पर प्री जीएसटी रिजीम अगर हम देखें तो 15% सर्विस टैक्स था, बट दैट वाज आल्सो एग्जाम थ्रू द मेगा एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन। इम्पैक्ट ऑफ जीएसटी ऑन हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री। जीएसटी का हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट रहा हमारे यहाँ? रिड्यूस मल्टीपल टैक्सेशन। जो मल्टीपल टैक्सेशन पहले सम होकर अब हमारे यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल हुआ। हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में सबसे मेजर बेनिफिट था कि जो मल्टीपल टैक्सेशन सिस्टम था वो क्लैरिफाई हुआ और उस पर एक सिंगल टैक्सेशन सिस्टम आया, जीएसटी। Abolition of multiple taxes will likely lead to a drop in the erstwhile lengthy administrative process of tax calculation.
जो टैक्स कैलकुलेशन बहुत लेंदी हुआ करती थी होटल इंडस्ट्री में, लाइक अगर हम कुछ भी सर्विस दे रहे हैं इंक्लूडिंग कंपोजिट, सपोज हमने एक रूम बुक किया है फॉर रेंट ऑफ 7500 इंक्लूडिंग कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट ऑफ ₹1500। उस केस में क्या होता था, जब हम सर्विस का कैलकुलेशन करते, बिल का जब टैक्सेशन का कैलकुलेशन करते थे, तो उस कंपोनेंट पे हमारे सर्विस बिल अवेलेबल होता था, लेवेबल होता था, और वैट बिल अवेलेबल था। ऑन द complimentary breakfast, VAT was also leviable. On room rent, service tax was leviable, luxury tax was leviable, and on the complimentary breakfast, service tax was also applicable. In that case, multiple taxation होने से बहुत क्लैरिटी नहीं होती थी कि टैक्सेशन क्या है। टैक्सेशन की जो प्रोसेस थी वो स्ट्रीमलाइन नहीं थी, बहुत लेंदी थी। अब जो है जीएसटी में, उससे हमारा टाइम सेव होगा और वो लेंदी प्रोसेस को बहुत स्ट्रीमलाइन कर दिया गया है। जीएसटी के आने के बाद जब हम अकाउंट्स की बात करेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करेंगे, तो उसमें जो जीएसटी में जो अकाउंटिंग है वो बहुत प्रॉपर होगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी इम्प्रूव होंगे और टैक्स प्लानिंग करना भी इजी रहेगा। जीएसटी का जो मोटो था वो था लेस रूम फॉर टैक्स एवेजन और अवॉइडेंस। सिंस बुक्स अकाउंटिंग रिपोर्ट्स बहुत प्रॉपर होंगे, इसमें एक्यूरेट रिपोर्ट्स मेंटेन करने की लाइबिलिटीज है और सिंगल टैक्सेशन सिस्टम है, तो प्रॉफिटेबिलिटी भी प्रॉपर होगी हमारे होटल्स की। तो वहां पर बहुत कम चांसेस रहेंगे कि कोई भी टैक्स अवॉइड कर सके या टैक्स एवेजन कर सकता है। तो इसीलिए ये जो जीएसटी है होटल इंडस्ट्रीज के अंदर जो करप्ट फ्री इंडिया है उसको हम ज्यादा अच्छे से देख सकते हैं कि करप्ट इंडिया कैसा रहेगा, लीगलिटी रहेगी, उसमें प्रॉफिटेबिलिटी प्रॉपर शो होगी, सिंस सारी बिलिंग प्रॉपर होगी जीएसटी में। इसलिए उसके अलावा जीएसटी कंप्लायंस और इम्प्लीमेंटेशन जो प्रोसेस है, उसमें जो फाइलिंग मल्टीपल स्टेजेस पे जो रिटर्न फाइलिंग हो रही है, वो जो टेक्निकल बर्डन है वो एक हमारे होटल्स पे जो कंप्लायंस कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा हुई थी। जब जीएसटी इंप्लीमेंट हो रहा था होटल्स में, सिंस होटल्स आर हैविंग different softwares for their accounting, for their POS, for their room services, for their food and beverages services, उस केस में वहां पर टेक्नोलॉजिकल जो बर्डन था, जो कंप्लायंस कॉस्ट थी, वो बहुत हाई रही है, क्योंकि उन सबके सॉफ्टवेयर भी डिफरेंट थे। किसी ने मोस्टली होटल्स अपने अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज भी करवाते हैं, तो उस कस्टमाइजेशन के रीजन से उनमें बहुत ज्यादा हायर कॉस्ट पे गए वो सब जब वो इम्प्लीमेंट हुआ। जीएसटी के बाद एक इम्पैक्ट और आया, जब जो हमारा सर्विस टैक्स था उसमें सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन अलाउड था, लेकिन जब जीएसटी आया तो होटल इंडस्ट्रीज में ये है कि जो सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन था उन सबको हम ईच स्टेट, मतलब सारे स्टेट्स के अंदर रजिस्ट्रेशन लेने पड़े। In the GST, the procedure of all the invoices, receipts, toward inward and outward supply will become cumbersome, as each one of them will have to be uploaded in the system. जो बेसिक जीएसटी लो है दैट सेज कि हमें सारे इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज की जो भी इनवॉइसेस हैं, हमें उनकी डिटेल्स अपलोड करनी है इन सिस्टम थ्रू जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 2। सिंस जीएसटीआर 2 उस फेज में सक्सेस नहीं हुआ, तो अब हमें अपलोड नहीं करनी पड़ रही है, लेकिन अभी भी आउटवर्ड सप्लाईज की सारे इनवॉइसेस अपलोड करनी पड़ रही है। और जब ई इनवॉइसिंग आया है, ई इनवॉइसिंग के केस में तो हमें सारी इनवॉइसेस ई इनवॉइसिंग के थ्रू ही बनानी पड़ रही है। In a GST, frequency and number of returns are also high as compared to pre-GST era. Pre-GST era में सिर्फ लग्जरी टैक्स की रिटर्न जाती थी, वैट के जाती थी, और सर्विस टैक्स की जाती। सर्विस टैक्स की रिटर्न्स was on a half yearly basis. VAT and luxury tax was on quarterly basis and annual basis. But in GST, it is a monthly basis, twice in a month. And जो बेसिक लो कहता है
according to GST, that would be a 3 returns per month and an annual return. Since alcohol is out of purview of GST, इनके तो GST पे जो टैक्सेशन GST जो है वो अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा. इन दिस केस जो भी होटल्स हैं, जो भी रेस्टोरेंट्स हैं विच आर प्रोवाइडिंग अल्कोहल्स फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, उन सब पर वैट भी आज भी एप्लीकेबल है सेम एज बिफोर, और उस पर आज GST एप्लीकेबल नहीं है बिकॉज alcohol is out of purview of GST. It was sometimes difficult to differentiate between a value-added tax or an entertainment tax for a common man. However, under the GST regime, customer will see only a single charge on their bill, and it will give them a clear picture of tax they are paying. पहले एज ए कस्टमर दे डोंट नो कि उन्हें क्या टैक्सेस पे करने पड़ रहे हैं. बहुत सारे टैक्सेस उसमें बिल में चार्ज होकर आते थे एंड दे डोंट नो व्हाट इज द रेट एंड ऑल. Now they have a single tax in their bill, that is GST. The hospitality industry as a whole will now find it easier to claim and avail input tax credit. Sometime that was not possible in pre-GST era. Pre-GST era में क्या होता था कि input tax credit was divided in state government and central government. Now in GST, after the GST regime, ITC of input, capital goods and input services, all are available to the registered person, and which was not available in pre-GST era. अब हम जब पोस्ट GST एरा की बात करें हॉस्पिटलिटी सेक्टर में, तो क्या क्या चेंजेस आए. सबसे पहले हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री जस्ट लाइक रेस्टोरेंट विच आर प्रोवाइडिंग फूड एंड बेवरेजेस एंड सर्विसेज आल्सो, उनको क्लासिफाई किया एज पर सब क्लोज ए ऑफ एंट्री नंबर 5 ऑफ शेड्यूल 2 ऑफ CGST एक्ट 2017. शेड्यूल 2 में क्या डिफाइन किया? रेंटिंग इमोबल प्रॉपर्टी, hotel accommodation supply is considered as supply of service. होटल अकोमोडेशन सप्लाई को सप्लाई ऑफ सर्विस माना गया एज पर नोटिफिकेशन नंबर 11/2017. सेंट्रल टैक्स रेट डेटेड 28/6/2017. that was defined under heading 9963 prescribed rate of accommodation, food and beverages services. As per the entry number 6 of schedule 2, which includes supply by way of or an part as a part of any service or in any other manner whatsoever of goods being food or any other article for human consumption or any drink other than alcoholic liquor for human consumption, where the supply or services for cash or deferred payment or other valuable consideration. That was also considered as composite supply of service. That means restaurant service is also defined as a supply of service as per the entry number 6 of schedule 2. What it says? Supply by way of as a part of any service or in any other manner. गुड्स की जो सर्विस है, गुड्स को अगर हम गुड्स और बीइंग गुड्स और एनी अदर आर्टिकल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और एनी ड्रिंक, कोई सा भी गुड्स है जो फूड है या ह्यूमन कंजम्पशन के लिए या एनी ड्रिंक अदर देन अल्कोहलिक लिकर, जो भी है वो एज ए पार्ट ऑफ सर्विस अगर उसकी सप्लाई की है फॉर ए कंसिडरेशन, फॉर डेफर्ड पेमेंट और फॉर कैश, उस सर्विस को सप्लाई को भी क्या माना है उन्होंने, उस सप्लाई ऑफ फूड को सप्लाई ऑफ सर्विस, कंपोजिट सप्लाई ऑफ सर्विस. सबसे पहले हम होटल अकोमोडेशन हॉस्पिटल सर्विसेज पे जीएसटी के जीएसटी रेट्स क्या हैं वो चेक करते हैं. नाउ वी कम ऑन द जीएसटी ऑन होटल अकोमोडेशन सर्विसेज. होटल अकोमोडेशन सर्विसेज जो हैं उन पर जो जीएसटी रेट्स हैं डेटा बेस्ड ऑन द टैरिफ चार्ज पर डे.
the what amount of tariff or what amount of room rent has been charged per day per room shall be considered for determining the rate of tax of the GST. इसमें भी दो नोटिफिकेशंस आए थे अप टू 30/9/2019 तक जो जीएसटी रेट थी दैट वाज at a higher of 28% with ITC, but after 1st of October 2019 it was higher, it was highest 80% with full ITC. जब जीएसटी आया था तो उस टाइमिंग पे जो जीएसटी की जो रेट थी रूम्स पे दैट वाज 28% if the 7500 or above per day room rent has been charged. Up to 1000 rupees per day if the room rent is, then GST rates are exempt. But in case of 1000 and above and up to 2500, GST rate was 12% up to 30/9/2019, and still it is 12%. But on above 2500 up to 7500, it is 18%. It was 18% and now it is 12% after 1st of October 2019. But on 7500 and above per day, it is 28%. It was 28% and now it is 18% with light. And what is hotel accommodation service? Hotel accommodation services was not defined in earlier stage of GST law, but after with the expansion, the definition was added through a notification number 20/2019 dated 30th September 2019. As per this notification, hotel accommodation means supply by way of accommodation. That means supply by way of accommodation in a hotel, inns, guest houses, clubs, campsites. Campsites means जो कैंप्स में हमें होटल सर्विसेज प्रोवाइड होती है, जो कैंप्स लगाते हैं जैसे लाइक पुष्कर, इन पुष्कर, जैसलमेर एक्सेट्रा, और अदर कमर्शियल प्लेस मीन फॉर रेजिडेंशियल और लॉजिंग पर्पस, और कोई भी ऐसा प्लेस जहां कमर्शियल प्लेस जहां पर रेजिडेंशियल और लॉजिंग पर्पस से accommodation provide किया, including the supply of time share uses rights by way of accommodation. Including the supply of time share uses means सपोज करिए आपको डे यूज रूम अवेलेबल करवाया, किसी भी जगह पे आप चाहते हैं कि आपको 6 आवर्स 7 आवर्स के लिए रूम चाहिए और आपको होटल में 6 to 7 आवर्स 2-3 आवर्स के लिए रूम प्रोवाइड किया है, दैट इज आल्सो इंक्लूडेड इन द होटल अकोमोडेशन सर्विसेज. आपको टाइम शेयर बेसिस पे भी आपको यूजर्स राइट्स प्रोवाइड किए हैं, उस केस में भी होटल अकोमोडेशन सर्विस में कवर होगा. And what is declared tariff? Declared tariff भी earlier हमें GST लॉ में प्रोवाइड नहीं किया था, बट थ्रू वाइड नोटिफिकेशन नंबर 20/2019 इसमें भी थ्रू एक्सप्लेनेशन इसको ऐड किया. डिक्लेयर्ड tariff means charges amenities in a unit of accommodation. मतलब जब आप स्टे कर रहे हो तो वहां पर स्टे करने के लिए आपको जो भी ऑल अमेनिटीज जो भी प्रोवाइड किया है, लाइक फर्नीचर, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, एनी अदर अमेनिटीज, बट विदाउट एक्सक्लूडिंग एनी डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन द पब्लिश्ड चार्ज ऑफ सच यूनिट. डिक्लेयर टैरिफ का मीन क्या हुआ आपके लिए? डिक्लेयर टैरिफ वो हुआ कि जो आपका उस पर्टिकुलर रूम को या उस पर्टिकुलर प्लेस को यूज करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम में जो आपका रेंट उन्होंने डिसाइड किया है विदाउट गिविंग एनी डिस्काउंट, दैट विल बी अ डिक्लेयर्ड टैरिफ. डिक्लेयर्ड टैरिफ कहाँ यूज होगा? प्रीवियसली सर्विस टैक्स में डिक्लेयर्ड टैरिफ यूज होता था, लेकिन आफ्टर जीएसटी इज टैक्सेबल ऑन द वैल्यू ऑफ सप्लाई, तो वहाँ डिक्लेयर्ड टैरिफ का मीन नहीं है फॉर द अकोमोडेशन सर्विस, क्योंकि अकोमोडेशन सर्विस पे जो जीएसटी रेट्स है वो एक्चुअल रेंट चार्ज, एक्चुअल रूम रेंट चार्ज पर डे उस पर एप्लीकेबल होता है.
Now we come to the GST on hotel restaurant services. What GST taxability on food and beverages services. Hospitality industry में जो restaurant services, that is also important, and it incorporates a huge part. जब GST आया था 1 जुलाई 2017 से, उस टाइमिंग में जो टैक्सेबिलिटी थी रेस्टोरेंट सर्विसेज, दैट वाज हेडेड अंडर अकोमोडेशन फूड एंड बेवरेजेस सर्विसेज. उस टाइम पे जो GST आया था, दैट वाज 12% एंड 18%. In case no air conditioner or central heating provided at any time during the year in a restaurant, then the rate was 12%. And if the restaurant has having the facility of air conditioning or central heating at any time during the year, 18%, and other than both, that was also 18%. But the rate was amended after 15th of November 2017. जब इनिशियली GST आया था तो उस टाइमिंग पे क्या था, जो रेस्टोरेंट थे जिनमें एयर कंडीशनिंग फैसिलिटी थी और सेंट्रल हीटिंग थी, बट दे आर वर्किंग ऑन अ स्मॉल स्टेज और स्मॉल और मीडियम साइज में थे, उस केस में जब GST इंप्लीमेंट हुआ तो उस टाइमिंग में GST की रेट सेव करने के लिए होटल्स ने क्या किया, अपने यहाँ से एयर कंडीशंस रिमूव कर दिए, सेंट्रल हीटिंग रिमूव कर दी, सो दैट दे विल फॉल अंडर 12% इंस्टेड ऑफ 18%. उसके बाद एक अमेंडमेंट आया, उसमें हमारी GST की रेट्स में वापस चेंजेस किए इन द 37th GST काउंसिल मीटिंग, and these has come effect from 1/10/2019. उस केस में क्या किया, जितने भी स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट थे, irrespective of they are having air condition or not, they are having a central heating or not, उस केस में क्या किया उन्होंने 5% GST अलाउ किया विदाउट ITC. मतलब अगर किसी भी रेस्टोरेंट जो स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट है जिसमें हम होटल अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, उस केस में क्या है, अगर उसमें एयर कंडीशन है या नहीं है ये नहीं चेक करेंगे, उसमें ऑप्शन होगा आपके पास 5% आप GST पे कर सकते हो विदाउट ITC बेनिफिट. मतलब ITC का बेनिफिट नहीं मिलेगा उस केस में. इन केस रेस्टोरेंट इज अदर देन स्पेसिफाइड प्रेमाइसेस है. स्पेसिफाइड प्रेमाइसेस क्या है, व्हाट इज स्पेसिफाइड प्रेमाइसेस? स्पेसिफाइड प्रेमाइसेस को डिफाइन किया. स्पेसिफाइड प्रेमाइसेस भी अगेन इसी नोटिफिकेशन में डिफाइन की. स्पेसिफाइड प्रेमाइसेस मींस premises providing hotel accommodation services having declared tariff of any unit of accommodation above 7,500 rupees per unit per day or equivalent. इसमें क्या है, declared tariff of any unit of accommodation. कोई से भी accommodation unit जिसका declared tariff 7,500 rupees से above है, तो वो सारी premises क्या है, specified premises. We have already discussed the declared tariff. Declared tariff वो है जो आप पब्लिश करते हैं for the purpose of showing कि हमारी वेबसाइट पे हमने डिक्लेयर किया कि हमारा पर्टिकुलर इस रूम का टैरिफ ये है. उस केस में अगर किसी भी रूम का आपका टैरिफ 7,500 पर डे से 7,500 रुपीज पर डे पर यूनिट से ज्यादा है, उस केस में आपकी जो प्रेमाइसेस होगी वो होगी स्पेसिफाइड प्रेमाइसेस. अगर हम रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं अदर देन स्पेसिफाइड प्रोमाइसेस में, मतलब जिसका रूम टैरिफ 70 अप टू 7,500 है, अगर किसी भी एक दिन आपका ड्यूरिंग द ईयर 7,500 से ज्यादा किसी भी यूनिट हो गया, उसमें 5% विदाउट GST आपको अवेलेबल नहीं होगा. रेस्टोरेंट इन स्पेसिफाइड प्रोमाइसेस, उस केस में क्या किया उन्होंने, 18% ऑफ GST लेविएबल है विद फुल ITC. स्पेसिफाइड प्रेमाइसेस वो होंगे जिसमें 7,500 एंड अबोव रूम रेंट चार्ज होता है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर. रेस्टोरेंट सर्विसेज क्या होती है? रेस्टोरेंट सर्विसेज मींस सप्लाई बाय वे ऑफ और एज पार्ट ऑफ एनी सर्विस. मतलब कोई भी सप्लाई जो भी किसी भी सर्विस के का पार्ट हो या सर्विस के रूप में हो, of goods being food or any other article for human consumption.
गुड्स का जो आप सप्लाई करेंगे, बीइंग फूड, जो फूड होगा या कोई भी ऐसा आर्टिकल जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है, या कोई भी ऐसा ड्रिंक प्रोवाइडेड बाय ए रेस्टोरेंट, ईटिंग जॉइंट इंक्लूडिंग मैस, कोई भी कैंटीन, वेदर फॉर कंजम्पशन और अवे फ्रॉम द प्रेमाइजेस, जो आप वहां पे कंजम्पशन के लिए प्रोवाइड करें या फिर उस प्रेमाइजेस से दूर जाकर भी उस फूड को या फिर उस पर्टिकुलर आर्टिकल जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है या फिर उस ड्रिंक को यूज किया जा, कंजम्पशन किया जा सकता है, वो सब रेस्टोरेंट सर्विस में डिफाइंड है। सपोज करिए आप मैकडी पे जाते हैं, वहां पर टेक अवे लेते हैं और अपने घर जाकर उसको कंजम्पशन करते हैं, दैट विल आल्सो कवर अंडर द रेस्टोरेंट सर्विसेज। इसके अलावा रेस्टोरेंट्स के लिए कंपोजिशन स्कीम भी थी। नाउ द कंपोजिशन स्कीम का जो कंपोजिशन स्कीम है, दैट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 10। That scheme includes कि 5% GST leviable होगा without having the benefit of ITC. In case अगर किसी रेस्टोरेंट का टर्नओवर 1 करोड़ है, स्पेशल कैटेगरी that is 1 crore, and this threshold was earlier 75 lakh and 1 crore, can avail the benefit of composition scheme under section 10 of CGST Act 2017. With this scheme, only 5% GST will be leviable on the supplier, breaking up into 2.5% CGST and 2.5% SGST. This tax has to be paid out of pocket by the restaurants, as they are neither entitled to avail input tax credit or tax paid on inputs such as raw material or the services, nor they can recover the tax from their customers. मतलब अगर हम विदाउट कंपोजिशन स्कीम की बात करें और वो 5% जीएसटी का बेनिफिट ले विदाउट आईटीसी, बट दे कैन रिकवर इट फ्रॉम द कस्टमर्स। बट इस कंपोजिशन स्कीम में क्या होगा, दे कांट रिकवर इट फ्रॉम द कस्टमर्स, दे कैन नॉट चार्ज एंड शो इन द बिल। However, they have the option to pay full tax and avail tax credit open to them. मतलब एक पर्सन के पास जिसका 1.5 करोड़ तक का टर्नओवर है, रेस्टोरेंट, एंड ही इज सप्लाइंग रेस्टोरेंट सर्विसेज, उसके पास ही हैव द ऑप्शन टू अवेल द कंपोजिशन स्कीम और नॉट। वो चाहे तो पुरानी जो नॉर्मल स्कीम है उसमें रह करके स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट की तरह 5% जीएसटी विदाउट आईटीसी का बेनिफिट भी ले सकते हैं। कंपोजिशन स्कीम के केस में they have to file GSTR 4, but in normal scheme they have to file GST returns on monthly or quarterly basis. Now service hospitality industry में, that is outdoor catering services. मतलब हम होटल अकोमोडेशन सर्विस अवेल करते हैं, रेस्टोरेंट सर्विस अवेल करते हैं, बट दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट द कैटरिंग सर्विसेज। होटल इंडस्ट्रीज का जो भी मेजर पार्ट होता है रेवेन्यू का, दैट इंक्लूड्स दिस आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज, जस्ट लाइक इट आल्सो इंक्लूड्स लाइक शामियाना, इट्स इंक्लूड्स मैरिज, इट आल्सो इंक्लूड्स कॉन्फ्रेंसेज आल्सो। जितनी भी आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज हैं उसके लिए जीएसटी जब आया था तो इसकी जो रेट्स थी वो डिफाइन हुई। now the current rates are in all the standalone outdoor catering services, this is the 5% without ITC benefit. In case of food parcels or takeaways, it is also 5% without ITC benefit. But if it is a normal or composite outdoor catering, composite outdoor catering क्या हुई? Composite outdoor catering means this is the composite supply, just like conferences, exhibitions. No, not an exhibition. This is conference, marriage, शामियाना or any other events, जिसमें हम आपको supply of service भी दे रहे हैं और rental है, मतलब right to use that place also, and we are providing catering services. That is a composite catering, outdoor catering services. अगर हम composite catering services within hotel provide करते हैं जहां पर room tariff 7,500 and dash है, in that case 5% GST would be leviable.
और अगर हम वो कंपोजिट और नॉर्मल आउटडोर कैटरिंग विद इन ए होटल दे रहे हैं, that is a specified premises. That specified premises means room tariff is 7,500, more than 7,500 for any unit per day. During any time in a year. उस केस में क्या होगा, 18% जीएसटी विद फुल आईटीसी, मतलब 18% जीएसटी चार्ज करेंगे और आईटीसी बेनिफिट ले सकते हैं. What is the outdoor catering services? Outdoor catering services means supply by way of or as a part of any service of goods, being food or any other article for human consumption or any at exhibition halls, events, marriages or other outdoor or indoor functions that are event based or occasional in nature. मतलब कोई भी इवेंट बेस्ड प्रोग्राम है, ओकेजनल है, कोई मैरिजेस है, कोई इवेंट्स किया है हमने, कोई एग्जीबिशन किया है, कॉन्फ्रेंसेस किए हैं, उसमें आप जो भी सप्लाई करेंगे एज ए सप्लाई ऑफ गुड्स और फूड्स, दैट इज आउटडोर कैटरिंग सर्विस. अब सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है और रेट्स है रेस्टोरेंट और होटल्स में, तो उस केस में लिटिगेशंस भी हुए, उस केस में AAR भी लगे हमारे, उस केस में हमारे पास कुछ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स है, जस्ट लाइक कुंदन मिष्ठान भंडार. इस केस में क्या हुआ था कि आईटीसी, द अपीलेंट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग उत्तराखंड हेल्ड दैट in case of sale of food item from a restaurant, GST rate on restaurant service will be applicable on all such sales and ITC will not be allowed. In case of sale of those items from sweet shop counter, it will be treated as supply of goods and GST rates of the respective items being sold will be leviable and ITC will be allowed on such supply. मतलब अगर वो रेस्टोरेंट सर्विस होगी तो रेस्टोरेंट सर्विस में वो जो भी सेल होगी उस पर रेस्टोरेंट सर्विस वाला जीएसटी रेट्स लगेंगे और उस पर आईटीसी अलाउ नहीं होगा. लेकिन वो अगर वो स्वीट शॉप काउंटर है, उसको रेस्टोरेंट सर्विस ट्रीट नहीं किया उन्होंने और वो सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे एंड सप्लाई ऑफ गुड्स विल बी लेविएबल एंड आईटीसी विल बी अलाउड ऑन सच सप्लाई. सेम केस हुआ आर्यंत एंटरप्राइजेस का. आर्यंत एंटरप्राइजेस में क्या था, दिस इज द आइसक्रीम, मतलब आइसक्रीम सेल कर रहे थे ये एज ए फ्रेंचाइजर एंड रीसेल करते थे उसे. क्या था, द अपीलेंट क्रीम फ्रॉम इट्स फ्रेंचाइजर एंड रीसेल्स द सेम इन द होलसेल एंड रिटेल सेल पैकेजेस. आर्यंत एंटरप्राइजेस अपनी फ्रेंचाइजी से आइसक्रीम परचेज करता था, उसको रीसेल करता था एज ए होलसेलर और रिटेलर. The applicant sought advance ruling on whether supply of ice cream by it from its retail outlets would be treated as supply of goods or supply of service or a composite supply. उसने advance ruling किसके लिए apply की? The question was whether supply of ice cream by it from its retail counters would be treated as supply of goods, supply of service or a composite supply. The applicant supplied that it exclusively deal in the ice cream manufactured by the franchisor and sells the same to its customer without any further processing or chemical change. The customer places the order from the menu and ice cream are sold by it in scoop, cones or after being topped with fruit at fixed rate. The authority observed that as per the CGST Act 2017, service is defined as anything other than goods for which a separate consideration is charged. In this case, no extra money is charged from the customer for ice cream consumption as they are free to consume the same either inside or outside the outlet. Also, no serving or dining facility is provided by the applicant. Therefore, there is a transfer of title in ice cream from the applicant to its customer and therefore, as per the CGST 2017, the sale of ice cream from a retail outlets by the appellant is to be treated as supply of goods. मतलब आइसक्रीम उसने परचेज की और रीसेल की टू द सप्लायर विदाउट एनी फर्दर प्रोसेसिंग. उस केस में इन एडवांस रूलिंग उसको सप्लाई ऑफ गुड्स माना, उसको सप्लाई ऑफ गुड्स ट्रीट किया, नॉट अ सप्लाई ऑफ सर्विस. सेम इन केस ऑफ कॉफी डे ग्लोबल लिमिटेड, एडवांस रूलिंग
business of restaurant in the name and style of CCD, which serves the non-alcoholic beverages and food items. उसमें डिसाइड किया रूलिंग अथॉरिटीज हेल्ड दैट द एक्सप्लेनेशन गिवन इन द नोटिफिकेशन 46/2017 सेंट्रल टैक्स रेट clearly stipulates that shall attract central tax rate of 2.5% without any ITC. Therefore, the CCD is liable to pay GST at the rate of 5% without ITC. Same in case of Hudson Agro Products Limited. The authority held that supply of ice cream and other food items as per the customer's order served in a outlet is a composite supply of food and beverage services and is taxable at 5% GST. Now we have some question and answers related to the hotel accommodation and restaurant services. First question is, will GST to be charged on actual tariff or declared tariff for accommodation services? The answer is, as per the notification number 13/2018 CT rate. For the word declared tariff, wherever they occur, the word value of supply shall be substituted. That means GST is applicable as per the transaction value and not as per the declared tariff. In previous pre-GST era, GST service tax was leviable on declared tariff. The second question is, where will the declared tariff be published? Tariff declared anywhere, say on the website through which business is being procured, printed on the tariff card or displayed at the reception will be the declared tariff. In case of different tariff is declared at different places, then highest of the such declared tariff shall be declared tariff for the purpose of levy of GST. And declared tariff को यूज हम किसके लिए करेंगे? जब हम रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके लिए स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस की जब हम चेक प्रीमाइसेस देखेंगे कि स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस है या नहीं, इन दैट केस हम डिक्लेयर टैरिफ के लिए चेक करेंगे कि डिक्लेयर टैरिफ क्या होगा. Same room may have different room tariff at different time depending on season and flow of tourists as per dynamic pricing. Which rate to be used then? Question is, same room may have different room tariff at different time depending on season or flow of tourists as per dynamic pricing. Which rate to be used then? In that case, different tariff, in case of different tariff is declared for different seasons and period of the year, the tariff declared for the season in which the service of the accommodation is provided shall apply. मतलब जब आपने उस सीजन में जो डिक्लेयर टैरिफ है, जब आपने सर्विस उस अकोमोडेशन की दी है, उस टाइमिंग में जो डिक्लेयर टैरिफ था उसको डिक्लेयर टैरिफ मानेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम रेट डिसाइड करेंगे. एक क्वेश्चन है, व्हाट इफ टैरिफ चेंजेस बिटवीन बुकिंग एंड एक्चुअल यूजेस, व्हिच रेट विल बी यूज्ड? सपोज करिए आपने बुक कर लिया आज 6 मंथ्स पहले और आपका उस टाइम जो डिक्लेयर टैरिफ था दैट वाज 7500 एंड जब आपने एक्चुअली उसको यूज किया देन डिक्लेयर टैरिफ वाज 77000. In that case, declared tariff at the time of supply of service would be applied, not at the time of booking of the service. The fifth question is, will GST rate be charged on actual tariff or declared tariff for restaurant services? It is declared tariff. For the room accommodation service, it is the actual price or actual tariff charge. But for the purpose of restaurant services, it is declared tariff, which is relevant for determining GST slab rates for food and restaurant services in a hotel. Even if just one room has declared tariff for more than 7500 at any time during the year, all the food or restaurant or catering services in or by a hotel will attract 18% of GST with ITC.
And now we see in a hotel, we have the luxurious hotel, which are providing all the facilities like spa, health club, swimming pool, telephone, internet, business conferences room, etc. In that case, we are also having these services. One service out of them is rent a cab service. जो additional perk hotels are providing a rent a cab service to the customer. In that case, what will be the GST rates? In case of rent a cab service, if the fuel cost is borne by the service provider, that means the hotel, then GST rate would be 5% with no ITC. In case fuel cost is borne by the service receiver, then the rate will be 12% and ITC will be available. One more service which hotels are providing to its customer, since we are having also the customers from the foreign, and they need, in case they need any foreign currency from them, they also provide them the foreign currency exchange services. GST on such services is leviable at the rate 18%, and the value of supply may be determined as per the clause 32B of the CGST rules 2017 at the option of the hotel. मतलब जो वैल्यूएशन है अपना, जो इसमें वैल्यूएशन है वो क्लोज 32 सीजीएसटी रूल्स का जो 32 है, रूल 32 क्लोज बी प्रोवाइड करता है, और ये ऑप्शन होटल पे डिपेंड करता है कि वो अगर किसी भी ईयर में इसको अवेल करता है इस ऑप्शन को, तो फुल ईयर में उसको उसी ऑप्शन को चूज करना होगा. उस केस में अगर आपने फॉरेन एक्सचेंज किया तो जीएसटी किस पे पेबल होगा? अगर सपोज करिए करेंसी वैल्यू जो एक्सचेंज की तो उसका जो ग्रोस अमाउंट था अप टू 1 लाख है, इन दैट केस 1% और 250 रुपीज विच एवर इज हायर. इन केस 1 lakh and above 1 lakh and up to 10 lakh, in that case 1000 plus 0.5%. In case 10 lakh and above, in that case 5500 plus 0.1%, or rupees 60,000, whichever is lower. Some other support services are also is a part of hotel industry, just like laundry services, gym, beauty parlor, saloon, spa, pool, telecommunication, business center, sale of gifts and handicraft. We see hotels में अब आज कुछ शॉप्स भी होती हैं, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स भी होते हैं जिनका जो सेल के लिए अवेलेबल होते हैं, बिजनेस सेंटर्स होते हैं, where we can have a business meeting. In that case, all items are taxable. All these services are taxable at 18%, except sale of gifts or handicrafts or shops. In case of sale of gifts or handicraft, the rate will be applicable as same as the rate applicable on such item. That means अगर हम कहीं पर किसी भी एज अ सेल ऑफ गिफ्ट और हैंडीक्राफ्ट में अगर हम क्लोज परचेज करें तो जो जीएसटी रेट्स होगी वो सेम है जो भी हमारी टेक्सटाइल पे जो क्लोज पे एप्लीकेबल होंगी वही टैक्स चार्जेबल होंगी. लेकिन लॉन्ड्री सर्विस, स्पा, सैलून सब में 18% एप्लीकेबल होंगी. And same will be headed under 199963. When we talk about the GST on the hospitality industry, GST किस पे चार्ज होगा? That will be the value of supply. Section 15 of CGST Act deals with the value of supply. Yes, and GST will be charged on the value of supply. And in case in general provision, what is the value of supply? Value of any supply shall be the transaction value, which is the price actually paid or payable for the said supply. But in certain cases, जो value of supply होगी, that will be at the option of the registered person, and that is given under Rule 32. अगर Rule 32 में कोई valuation method
डिटरमाइन करने का, वैल्यूएशन डिटरमाइन करने का मेथड अवेलेबल है, तो हम उसको भी यूज कर सकते हैं सर्टेन स्पेसिफाइड केसेस में, जैसे एयर टिकट बुकिंग होगी या फिर आपने फॉरेन एक्सचेंज सर्विस दी है, तो उस केस में हमारे पास रूल 32 के अकॉर्डिंग ही हमारा जो वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने का ऑप्शन होता है. In case of tour and travel services, transaction value of supply as per the general provision of section 15 shall be applicable. In case of air ticket booking, an option is given under rule 32 clause 3, according to which the value of supply shall be determined. अगर एयर टिकट बुकिंग है उस केस में हम 10% और 5%, डोमेस्टिक वैल्यू और डोमेस्टिक फ्लाइट के केस में और फॉरेन फ्लाइट के केस में हम 10% वाला भी यूज कर सकते हैं. Now we come to the place of supply. What will be the place of supply in case of hotels, restaurants, etc. So, जो point of supply, that is also an important point for the hospitality industry, that is defined under section 12 and 13 of the IGST Act. Section 12 deals with the cases where both the service recipient and providers are located in India. And section 13 deals in the cases where either the service provider or the service recipient is located outside India. In general cases, what is the place of supply in case of supply of service? In case of supply of service, in general, place of supply would be if made to a registered person shall be the location of such person. अगर सोच करिए जो होटल है उसने जो है वो किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दिया है, केस में रजिस्टर्ड पर्सन का जो लोकेशन होगा दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. इन एनी अगर आपने अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन दिया तो सप्लाई क्या होगी? अगर आपके पास रेसिपिएंट का लोकेशन अवेलेबल है रिकॉर्ड्स में तो that place would be the place of supply, or in other case location of the supplier of services will be the place of supply. But this sites accept the service specified in section 3 to 14. That means subsection 2 of section 12 provides for the place of supply in case of services, but accept the service specified in subsection 3 to 14. What is subsection 3 to 14? Subsection 3. Let's come to subsection 3. Subsection 3 covers the hotel accommodation and hotel related services. It is the place of supply of services directly in relation to a property, including services provided by interior decorator service. Let's leave it. Come to the clause B. By way of lodging accommodation by a hotel, inn, hotel, guest house, homestay, club, campus site, by whatever name called, and including a houseboat or any other vessels. इसमें क्या है, हमें सबसेक्शन 3 में स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड है by way of lodging accommodation by a hotel, in guest house, homestay, club, campus site, by whatever name called, और इंक्लूडिंग ए हाउस बोट. अगर आपने हाउस बोट और वेसल में भी सर्विस प्रोवाइड की है एज ए अकोमोडेशन लॉजिंग, तो वो सब कहाँ कवर होगी प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए? सबसेक्शन 3 में. And by way of accommodation, what is subclause C? By way of accommodation in any immovable property for organizing any marriage or reception or matter relating thereto, official, social, culture, religious or business function, including services providing in relation to such functions at such property, or any services auxiliary to the services referred to in clause B and C. उस केस में जो लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई होगा that shall be the location at which such immovable property or boat or vessel, as the case may be, is located or intended to be located.
In case of hotel accommodation services, outdoor catering services, restaurant services related to the immovable property, उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? Where the immovable property or boat or the vessels is located or intended to be located. Provided that if the location of immovable property or boat or vessel is located or intended to be located outside India, the place of supply shall be the location of the recipient. ये क्या कवर कर रहा है हमारा? In case service recipient or service provider both are located in India, but the property is located out of India. In that case, the place of supply shall be the location of such recipient, not the location of such immovable property. Explanation is also provided under subsection 3, where the immovable property or boat or vessel is located in more than one state or union territory. The supply of services shall be treated as made in each of respective states or union territories in proportion to the value for service separately collected or determined in term of contract or agreement entered into in this regard, or in the absence of such contract or agreement on such other basis as may be prescribed. This is the most confusing point, जहाँ पर ये जब हमारा आउटसाइड इंडिया है तब तो ठीक है, लेकिन अगर विद इन इंडिया है और वो बोट और वेसल लोकेटेड है मोर देन वन स्टेट्स में या मोर देन वन यूटीज में, उस केस में क्या होगा कि हमारा जो सप्लाई ऑफ सर्विसेज का प्रोपोर्शन कैसे डिफाइड होगा कि आपने जो जिस स्टेट में जो वैल्यू चार्ज की है सेपरेटली, अगर थ्रू ए कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट है दैट इज ओके, बट इन एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट ऑन सच अदर बेसिस एज मे बी प्रिस्क्राइब दैट इज नॉट डिफाइंड. मतलब वो जो बेसिस है वो हमें प्रिस्क्राइब भी नहीं है कि कैसे हम उसको डिफाइन करेंगे. दैट इज द मोस्ट कंफ्यूजिंग पॉइंट. एग्जांपल ऑफ दिस explanation also later on. Up section 13 which provides place of supply of services where location of supplier or location of recipient is outside India. अगर supplier of location of supplier or location of recipient कोई किसी की भी लोकेशन अगर आउटसाइड इंडिया है तो then in that case section 13 would apply. What it says, the place of supply of services except the service specified in subsection 3 to 13. Again, it is same as section 12. कि जो subsection 3 and 3 to 13 में जो services provide है, उनके अलावा जो भी services आपने provide किए हैं, उनका place of supply क्या होगा? Where the location of the recipient of service is not available. Sorry, location of the service or recipient of the services. अगर आपका लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट आउटसाइड इंडिया है तो रेसिपिएंट ऑफ सर्विस, लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सर्विस वुड बी प्लेस ऑफ सप्लाई. बट इन केस आपके पास रेसिपिएंट ऑफ सर्विस का लोकेशन अवेलेबल नहीं है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, देन प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस. बट अगेन इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज एंड इन केस ऑफ आउटडोर कैटरिंग, subsection 4 of section 13 says the place of supply of services supplied directly in relation to any immovable property, including services supplied in this regard by expert or estate agents. Supply of accommodation by a hotel, inn, guest house, club and campsite by whatever name called, grant of right to use immovable property, and service for carrying out or coordination of construction work, including that of architect and interior decorator, shall be the place where the immovable property is located or intended to be located. That means again in this case, in case location of supplier or location of recipient is outside India and we are providing the hotel accommodation service, the place of supply again would be the place where the immovable property is located.
For the outdoor catering services, the place of supply of services supplied by way of admission to or organization of a cultural, artistic, sports, scientific, educational or entertainment events or celebration, conferences, fair, exhibitions and similar events, and of service ancillary to such admission or organization shall be the place where the event is actually held. मतलब होटल्स के केस में क्या होगा, जहां भी इमूवेबल प्रॉपर्टी और इवेंट हेल्ड हुआ है, जहां भी हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है, जहां भी हमारा कॉन्फ्रेंस इवेंट हेल्ड हो रहा है, तो वो जो लोकेशन है दैट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. In short, we can say place of supply of services where the location of supplier of location and the location of recipient in India. उस केस में रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग सर्विसेज में लोकेशन क्या होगी प्लेस ऑफ सप्लाई की? The location where the services are actually performed. In case of lodgings and accommodation services, shall be the location at which the immovable property is located or intended to be located. What is the place of supply of service where the location of supplier or the location of recipient is outside India? उस केस में होटल अकोमोडेशन सर्विस की जो होटल अकोमोडेशन सर्विस होगी, then in that case place of supply shall be the location at which the immovable property is located or intended to be located. अब हमने बात की कि क्लासिफिकेशन क्या रहेगा हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज का, उसमें रेट ऑफ टैक्स क्या रहेगा, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा. लेकिन एज वेल हमारे यहाँ अकाउंट्स और रिपोर्ट्स की भी मेंटेन करना है. सिंस जीएसटी में बहुत ह्यूज लायबिलिटी हम पे डाली है to maintain the books and accounts and reports for the GST purpose. Then in this case, section 35 of the CGST Act 2017 states that the accounts and records are to be kept in physical or electronic form by person registered under GST at principal place of business. आपको जो अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स है वो फिजिकल या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जहां पर भी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है वहां पर मेंटेन करना है. वो लिस्ट ऑफ अकाउंट्स इज आल्सो प्रिस्क्राइब्ड, दैट इज इनवर्ड सप्लाई रजिस्टर, दैट मींस यू हैव टू मेंटेन द परचेज रजिस्टर. दिस इज द आउटवर्ड सप्लाई रजिस्टर, दैट मींस द सेल्स रजिस्टर, रजिस्टर ऑफ आईटीसी अवेल्ड, रजिस्टर ऑफ आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी and register of outward tax paid. You have to maintain all these 5 registers at your principal business, either in physical form or electronic form. और कितने टाइम तक आपको मेंटेन करना है? The accounts and reports are to be maintained and kept by the registered taxable person for a period of at least 72 months, that means 6 years. And this period will be counted from the last date of filing of the annual return for the relevant financial year. That means 6 years तो आपको maintain करना है और आपके लिए वो 9 months हो जब तक आपको वो annual return file करना है. That means you have to maintain it for 6 years 9 months at least. Extend हो गई है तो वो टाइमिंग आपका और ऐड हो जाएगा इसमें. Further, some additional records are required to be maintained as per the Rule 56 of the CGST Rule 2017, and these documents or reports are advance received adjustment made thereto. Since GST is leviable on the advances received, hence some additional documents are to be maintained just like advance received, paid, and adjustment made thereto. Tax payable on reverse charge basis. Name and complete address of suppliers from whom registered person has received the goods or services. Name and complete address of person to whom registered person have supplied the goods and services. Import and export of the services. All kind of invoices, challans, voucher, debit, credit notes.
आई थिंक कुछ रहा नहीं है डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने में. वी हैव द ह्यूज लायबिलिटी कि हमें अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग एंड अदर डिटेल्स have to maintain as per the GST law. इन प्रैक्टिकल सिनेरियो जब हम जीएसटी जब आया था और जीएसटी इम्प्लीमेंट करना था, होटल इंडस्ट्री हैव फेस्ड many problems just like the softwares, compatibility issues, taxation compatibility issue, calculation errors in the generating reports and all. जब जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ होटल्स में तो सबसे मेजर प्रॉब्लम थी इनवॉइसेस चेंज हुई जस्ट इन अ वन डे. उस टाइमिंग पे कुछ होटल्स ने मैनुअल इनवॉइसेस इशू किए. कुछ टाइमिंग के लिए उनके सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर सॉफ्टवेयर वेंडर्स was not able to provide system generated invoices or reports, proper reports. In that case उन्हें उस टाइमिंग पे मैनुअल सिस्टम पे भी फॉलो करना पड़ा. And still some softwares are not providing proper reports even after the 3-4 years of GST as required by the GST. सबसे मेजर प्रॉब्लम जो होटल्स में फेस होती है दैट इज द रूम रेंटल चार्ज दैट वाज नॉट बिल्ड. सपोज करिए आपने एक रूम बुक किया है 27th June and you are staying in the hotel till up to 2nd July. In that case, if you are closing the month on the 30th June, 3 days revenue will be the unbilled revenue. That means 28, 29 and 30th June. In that case, hotel will not raise any invoices for these 3 days and that will be a part of unbilled revenue for the hotel. होटल इंडस्ट्रीज में क्या होता है, होटल इंडस्ट्री इज वर्किंग फॉर द मॉड्यूलर बेस्ड वर्किंग. जस्ट लाइक उसमें जो मॉड्यूल्स होते हैं वो सब सेट होते हैं, पीओएस सिस्टम बना हुआ होता है. फॉर द रूम अकोमोडेशन सर्विसेज दे हैव द accommodation module or reservation module. For the food and beverages services they have the POS module, and for the financial purpose they have the backend module, backend support for the finance purpose और accounting software. तो जब ये सारे मॉड्यूल कंसोलिडेट होते हैं उस केस में क्या होता है होटल्स के अंदर, होटल्स की जब हम रिपोर्ट जनरेट करते थे जीएसटीआर 3B या 1, तो 3B और 1 अलग होता था और हमारा जो फाइनेंशियल बेस पे जो ट्रायल बैलेंस होता था दैट इज डिफरेंट. उस केस में जब इनिशियली जब जीएसटी आया तो जीएसटी में जो रिपोर्ट जनरेट होती थी जीएसटीआर 1 एंड 3B, तो उसमें क्या अनबिल्ड रेवेन्यू टीबी में तो इंक्लूड होती थी फाइनेंशियल्स में. मतलब अगर हम टीबी निकालेंगे तो दैट विल इंक्लूड अनबिल्ड रेवेन्यू ऑफ दीज 3 days, 28 June, 29 June and 30th June, which has not billed yet. But in GSTR 1 and GSTR 3B, it will be only up to 27th June, and these 3 days will not be a part of revenue because it is not billed yet, and it will be shown under unbilled revenue. उस केस में कुछ होटल्स मैनुअल जीएसटीआर 1 बना रहे थे, उसको मैनुअली टीबी से रिकंसाइल कर रहे थे बिकॉज टीबी वाज नॉट रिकंसाइल्ड विद दीज रिपोर्ट्स. उस केस में उन्हें मैनुअल रिकंसिलिएशन बना के रखना पड़ता था, कितनी अनबिल्ड रेवेन्यू है, कितने एडवांसेस है, और उसके अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल करनी पड़ रही थी. इवन ये बहुत मेजर इशू था. सेकंड मेजर इशू जो जीएसटी इंप्लीमेंटेशन के ड्यूरिंग होटल्स ने फेस किया दैट वाज द प्रोविजन फॉर 180 days. अकॉर्डिंग टू द इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रोविजंस ऑफ जीएसटी लॉ इट सेज अगर आपने 180 days में सप्लायर को पेमेंट नहीं किया है तो उस केस में आपको जीएसटी रिवर्स करना होगा. बट इन होटल इंडस्ट्री दिस इज वेरी
जनरल सिनेरियो कि 180 डेज में भी पेमेंट नहीं हो. They have the contracts where 90 days was allowed as a credit to the hotel industry, and they don't pay in 90 days, or they pay even after 6 months, 8 months, 9 months. That is normal. In this case, this provision of ITC reversal, if payment has not been made within 180 days, is so challenging. And I am working with many hotels, and they are not able to do reversal of such ITC in case payment has not been made within 180 days. Now we come to the input tax credit in case of hotel industry. Hotel industry can take input of all the input services, all the capital goods. Section 16 of CGST Act 2017 provides that every registered person shall be entitled to take credit of input tax charge on any supply of goods or services or both to him, which are used or intended to be used in the course or furtherance of his business. What Section 16 says, it provides that every registered person shall be entitled to take credit of input tax credit on any supply of goods or services or both to him, which are used or intended to be used in the course or furtherance of his business. इसने क्या किया, दिस पहले होटल इंडस्ट्री में आप जब प्री जीएसटी रिजीम था तो आप सारे गुड्स का इनपुट नहीं ले सकते थे, सारी सर्विसेज का इनपुट नहीं ले सकते थे और उनको क्रॉस यूज नहीं कर सकते. जैसे वैट का इनपुट आप सर्विस टैक्स के अगेंस्ट यूज नहीं कर सकते, सर्विस टैक्स का इनपुट आप वैट के अगेंस्ट नहीं कर सकते. लेकिन इन जीएसटी we have the single taxation system of GST, and we can have ITC of all the goods, services, or capital goods. In case of hotel industry, we have the block credit also as per section 17 subsection 5. What it says, as per section 17 subsection 5, notwithstanding anything contained in subsection 1 of section 16 and subsection 1 of section 18, input tax credit shall not be available in respect of food and beverages, outdoor catering, beauty treatment, health services, cosmetic and plastic surgery, except where the inward supply of goods or service or both of a particular category is used by a registered person for making an outward taxable supply of same category of goods or services or both, or as an element of taxable composite or mixed supply. इसमें क्या है, सब क्लोज बी आपकी ब्लॉक क्रेडिट की बात करता है. ब्लॉक क्रेडिट आपकी किसकी होगी, फूड एंड बेवरेजेस एंड आउटडोर कैटरिंग सर्विस. दैट मींस आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज एंड फूड एंड बेवरेजेस सर्विसेज पे यू आर नॉट अलाउड टू हैव इनपुट टैक्स क्रेडिट except when the same service is provided for making an outward supply of same category of goods and services. अगर आप सेम कैटेगरी ऑफ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो और उसी के लिए सेम कैटेगरी ऑफ सर्विस अवेल कर रहे हो, इन दैट केस आप फूड एंड बेवरेजेस एंड आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज का इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं. अदरवाइज आप यू आर नॉट अलाउड टू हैव claim the credit of input tax paid on such food and beverages and outdoor catering services. In short, by virtue of section 17 subsection 5, no input tax credit shall be permissible on food and beverages and for outdoor catering unless the same is used for making outward taxable supply of same category of services. Therefore, the input tax paid on food and beverages and outdoor catering shall be allowed only if the same are used for making the outward supply of same category. Just a minute.
In case of tour operator services, that means 5% without GST. They cannot avail the ITC on goods and services used in the supply of services. In case ITC on goods and services used partly for supplying tour operator services at 5% and partly for effecting other services eligible for input tax credit. In that case, ITC portion used for effecting other services can be availed and the remaining can be reversed. As per section 17, use of input tax credit क्या होता है? अगर हमने partly for taxable supplies किया या zero rated किया है, then ITC will be available. Non-taxable supplies, exempt supplies and nil rated supplies किया तो that in that case ITC will not be available. अब एक सिनेरियो है कि जहाँ होटल में हम अल्कोहल भी प्रोवाइड कर रहे हैं. सपोज इन ए बार वी आर प्रोवाइडिंग अल्कोहल, इन ए रेस्टोरेंट वी आर प्रोवाइडिंग अल्कोहल as well as food item, food and beverages which are not alcoholic beverages. उस केस में क्या होगा, कुछ जो हमारी बेसिक सर्विसेज है, जो हम सपोज करिए हमने क्लीनिंग सर्विसेज ले रखी है, गार्डनिंग करवाई है कुछ बाहर, वहां पर वो सर्विसेज ली है, या फिर कुछ इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड है, कैपिटल गुड्स है, वो जो सर्विसेज है हमारी नॉन टैक्सेबल सप्लाई में भी काम आ रही हैं और टैक्सेबल सप्लाई से भी रिलेटेड है. उस केस में आपको आईटीसी कौन सा अवेल करना है? आप उसको पार्टली डिवाइड करेंगे एज पर नॉन टैक्सेबल सप्लाईज एंड टैक्सेबल सप्लाई. तो पार्टली जो टैक्सेबल सप्लाई से रिलेटेड होगा दैट आईटीसी विल बी अवेलेबल, और जो नॉन टैक्सेबल सप्लाई से रिलेटेड दैट आईटीसी वुड नॉट बी अवेलेबल, एंड यू हैव टू रिवर्स सच part of ITC. In GST era, what are the returns applicable on the hospitality industry? Right now we are only having GSTR 1 and GSTR 2, GSTR 3 are not live. GSTR 1 कौन सी होगी? आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ रिटर्न के लिए. For the final return, we have GSTR 3B now, summary of outward supply and ITC claim. GSTR 2 is अभी तक स्टार्ट नहीं हुए, लेकिन अब GSTR 2 जनरेट हो रहा है, that is auto populated inward supply for recipient of goods or services. GSTR 4 applicable है for composite taxpayers. GSTR 8 applicable है for e-commerce operator and TCS collectors. GSTR 9 and 9C for the annual return and reconciliation statement, where turnover is above 2 crore and 5 crore. अब हम लेते हैं कुछ ओपन इश्यूज अंडर जीएसटी. सबसे एक मेजर है, अभी हमने एक्सप्लेनेशन डिस्कस किया था इन केस ऑफ टूर ऑपरेटर्स. So then we have the difficulty in case of inbound travel services on principal basis. We have the tour operators sell tour packages to the tourists outside India for traveling within India, known as inbound services. There can be two models in which the tour operator works. One is on the commission basis, and the other one is the principal basis. In case we have the commission basis, there is no issue. In case of a commission basis, tour operator facilitates the tourist in booking of the accommodation, flights, land services, wherein the tour operator charge the commission for such facilitation and take reimbursement of actual expenses done on behalf of the tourist on bookings. In the given case, GST is charged on the value of such commission charged by the tour operator. Whereas under principal basis, tour operator sells a predefined or customized tour package to the tourist for which a lump sum amount is charged. जब वो lump sum amount charge करते हैं तो उस केस में हमें इश्यू आता है कि टूर ऑपरेटर के केस में जीएसटी कैसे चार्ज होगा. As per section 13 subsection 3 of the IGST Act, where either the recipient or supplier is from outside India and place of supply in case of principal basis of tour operator would be the location of performance of service. Therefore, with every location added in the
itinerary of travel. Place of supply would be each or every location booked, which in itself would create complexity, and it is impossible to proportionate the value of services to each UT or service in the itinerary and deposit the tax in accordance with the place of supply. अभी हमने यहाँ पे सेम केस इसमें भी आएगा जब हम बोट एंड वेसल्स की बात करते हैं, विच इज लोकेटेड इन मोर देन वन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी. द एक्सप्लेनेशन टू subsection 3 of section 12. This is where the immovable property or boat or vessel is located in more than one state or union territory. The supply of services shall be treated as made in each of the respective states and union territories in proportion to the value for services separately collected or determined in term of contract or agreement entered into this in this regard, and in absence of such contract and agreement on such other basis as may be prescribed. सेम केस अगर हम डिफरेंट रिस्पेक्टिव स्टेट्स में प्रोवाइड कर रहे हैं और सेम टूर एजेंट्स टूर ऑपरेटर सर्विस एज ए प्रिंसिपल हम प्रोवाइड कर रहे हैं अदर डिफरेंट रेस्पेक्टिव स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में, उस केस में बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है कि आप प्लेस ऑफ सप्लाई डिफाइन करने के लिए और जीएसटी कैसे चार्ज होगा. वी कैन हैव एन एग्जांपल. Suppose Mr. John has a booked 7 days trip from a tour operator, Ramesh and Company of India. The package is as follows. Day first from Mumbai to Ahmedabad. Day second local tour half day for Ahmedabad. Then 4th day train Ahmedabad to Jodhpur. Sightseeing and adventure activities in Jodhpur till 5th day, and 7th day from flight to Mumbai. In this case, we had covered in the aforesaid package, we have covered the 3 states: Mumbai, Maharashtra, Ahmedabad, Gujarat, and Jodhpur, that is Rajasthan. उस केस में महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में रमेश एंड कंपनी ने सर्विस दी है. They had to issue the separate invoices mentioning separate value to be booked for each and every state. Now it is impractical to issue separate invoices. Thus, it is necessary to bring clarity in this respect to such inbound services provided by tour operator to its customer located outside including drama and ballet, recognized sporting events. उस केस में क्या होता था, जब हमारे यहाँ पे प्री जीएसटी एरा था, प्री जीएसटी एरा तो सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ राइट टू एडमिशन टू सर्कस, डांस, थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेस including drama and balance recognized by sporting events was fully exempt without any limit of without any limit. लेकिन in GST era such services are exempt only if the such consideration for right to admission is not more than rupees 500 per person, and if the consideration is more than 500 per person, then the GST rate would be 18%. Since these activities are of the great importance and concern development of the country, it is impractical to say the limit should be 500 per person, because in case in these cases they can't charge rupees 500 per person in case they don't want to pay GST on such services. And since these activities do not have any input services, major inputs which can be used for input tax credit, in that case the rate of 18% would be very high, and promotion of these cultural activities impractical. One more issue
we have in the hospitality industries. How should be the services supplied by moving houseboats in Kerala and cruise ships may be केरला में हाउस बोट्स हैं, उनमें कुछ केसेस हैं जहां पर जिनकी हाउस बोट्स है, some rooms are occupied by those person and some rooms of those house boats are used as a used to provide accommodation services. These ships and boats generally offer a combo package which includes accommodation. Hello. Hence, we say that these services should also be covered within the meaning of tour operator services. In case the complete package is on cruise ship itself without any part of tour on land, a view might also be taken that dominant nature of transaction is transport of passengers. Therefore, it should fall under the heading 9964. That means passenger transportation services. In explanatory notes to the scheme of classification of services under GST in chapter 99, under the heading 9964 passenger transport services, the following classifications appears under heading 996415 local water transport services of passengers. That means ये सर्विसेज कहाँ कवर होगी? लोकल वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज और पैसेंजर्स. इस केस में हम जो मेजरली जो कवर कर सकते हैं दैट इज पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज ऑन रिवर्स और कैनल्स और अदर इनलैंड वाटर बाय फेरीज इंक्लूडिंग हाइड्रोफॉइल्स और होवरक्राफ्ट वेदर ऑन द शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड बेसिस. The third entry is passenger transportation service on river, canal or other inland water on scheduled or non-scheduled basis by vessels other than ferries, ships, sightseeing and excursion boats. Water taxis are also covered. Transportation service of accompanying vehicles, luggage, animals and other items. The package offered by the cruise ships to be enjoyed fully in water should fall in point number 2. That is inland water cruise that include transportation, accommodation, food services and other incidental services in an all-inclusive fares. तो सर्विसेज कहाँ कवर होगी? 9964. In this case, GST rate would be 18%. इसमें हमारे पास एक एडवांस रूलिंग भी अवेलेबल है, EVM मोटर एंड व्हीकल इंडिया. It was held that where applicant is operating a resort and in connection with some houseboats are being acquired and furnished with bedroom, dining room, etc. and houseboats are used for overnight cruise and day trips and meals are provided as a part of package. Services rendered by applicant are classified under the heading 9964 and service code number 996415. That means 18% tax would be applicable. Same case, what about the taxability of services provided by way of food and accommodation to tourists in static boats in Kashmir? तो GST है वो भी सेम होटल के जैसे ही चार्ज होगा उन अकोमोडेशंस में जो स्टैटिक बोट्स हैं. इन केस ऑफ स्टैटिक बोट्स नहीं है, डेटा का हाउस बोट्स मूविंग है, उस केस में उसे क्या कौन सी सर्विस पे कवर करेंगे हम लोग? 9964 local water transport services of passengers. Now we come to the GST on health sector services or hospital. We have covered the hospitality industry, what GST impact on the hotels and restaurants and tour operators. Now we come to the GST on the healthcare services. For health, since the healthcare services has become very important for our country,
And in this after COVID-19, we have understood the importance of this healthcare industry very well. हमारे पास ज्यादा टाइमिंग नहीं है तो हम इसको जल्दी जल्दी कवर करते हैं. What is the levy and tax, rate of tax under the healthcare industry? Healthcare services provided under healthcare services are covered by the SEC code 9993, and the GST rate of tax is 18%. But through the mega exemption list, we have exemption, and the tax rate is 0, except certain cases. Now we come to the, जैसे कि परवाल सर ने कहा था, एक क्वेश्चन था, उसमें एक सिनेरियो उन्होंने लिया. उस केस में उन्होंने सर्विसेज डिसाइड की कि कौन कौन सी सर्विसेज कवर होंगी, विच वुड बी टैक्सेबल, विच वुड बी एग्जाम, उसकी क्या बिलिंग होगी. वी विल डिस्कस what activities and what activities are taxable. In case of inpatient services, that means अगर हम उस पर्सन को एडमिट किया है, उसके बाद जो इम्पेशेंट सर्विसेज होती है, उस केस में मेडिसिन, कंज्यूमेबल्स एंड इम्प्लांट्स जो होते हैं वो सब एग्जम्प्ट है. इन केस ऑफ इम्पेशेंट सर्विसेज, जो फूड सप्लाई किया है पेशेंट को, दैट वुड आल्सो बी एग्जम्प्ट. जो रूम रेंट है इम्पेशेंट सर्विसेज में, वो भी एग्जम्प्ट है. डायग्नोस्टिक और प्री एंड पोस्ट कंसल्टिंग जो है वो भी एग्जम्प्ट है. डायग्नोस्टिक सेंटर्स भी एग्जम्प्ट है. रिटेंशन मनी अगर हॉस्पिटल ने कोई भी रिटेन किया है, दैट इज आल्सो एग्जाम. बट सेल ऑफ मेडिसिन, दिस इज टैक्सेबल. फूड सप्लाई टू द अटेंडेंट एंड विजिटर्स आर आल्सो टैक्सेबल. हॉस्पिटल हैविंग रेंटल इनकम ऑफ प्रीमाइसेस, सपोज करिए किसी हॉस्पिटल के आगे शॉप से और उसने मेडिकल शॉप्स को रेंट पे दिया है, तो दैट वुड बी टैक्सेबल सर्विस, एंड दिस विल अट्रैक्ट GST rate as per that service. होटल हैविंग इनकम ऑफ रूम्स प्रोवाइडेड टू द अटेंडेंट, इन केस अगर हॉस्पिटल ने अटेंडेंट को भी रूम प्रोवाइड किए हैं, तो उस केस में वो जो रूम रेंट होगा वो टैक्सेबल होगा. लेकिन जो पेशेंट्स के केयर के लिए जो रूम रेंट दिया है, दैट विल बी एग्जम्प्ट. व्हाट विल बी द GST रेट? ह्यूमन हेल्थ केयर सर्विसेज पे 18% GST रेट है, बट सिंस नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 इट इज एग्जम्प्ट. व्हाट आर दोस सर्विसेज? Inpatient services, human healthcare services, medical and dental services, childbirth and related services, nursing and psychotherapeutic services, ambulance services, medical laboratory diagnostic imaging services, blood, sperm and organ bank services, and other human services including homeopathic, Unani, Ayurveda, naturopathy, acupuncture and like. कौन कौन सी सर्विसेज टैक्सेबल है, दैट इज ऑल्सो मेंशन्ड हियर. रेजिडेंशियल केयर सर्विसेज फॉर द एल्डरली और डिसेबल्ड, जो भी डिसेबल्ड पर्सन है उनको जो रेजिडेंशियल केयर सर्विसेज हम प्रोवाइड करेंगे, दैट वुड बी टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 18%. अगर रेजिडेंशियल हेल्थ केयर सर्विसेज आपको अदर देन हॉस्पिटल प्रोवाइड किए किसी ने, तो दैट वुड ऑल्सो बी टैक्सेबल एट द रेट 18%. रेजिडेंशियल केयर सर्विसेज फॉर द एल्डरली और पर्सन विद डिसेबिलिटीज है, वो सब भी 18% टैक्सेबल है. जो एग्जम्पशन लिस्ट है, एंट्री नंबर 74 और नोटिफिकेशन नंबर 12/2017, व्हाट इज दिस? दिस सर्विस, what services are exempt under this notification are mentioned here. Services by way of healthcare services by a clinical establishment or an authorized medical practice or paramedics. What is paramedics? Paramedics means nurses, psychotherapists, etc. To any person are exempt. अब healthcare services, meaning of healthcare services क्या? What is healthcare services? Any services by way of diagnosis or treatment or care for illness, injury, deformity, abnormality or pregnancy in any recognized system of medicines in India.
जो भी रिकॉग्नाइज सिस्टम है मेडिसिन के इन इंडिया, उसके अंदर जो भी आपकी इलनेस, इंजरी, डिफॉर्मिटी, एबनॉर्मलिटी या प्रेगनेंसी के लिए डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट या केयर के लिए कोई भी सर्विस अगर आपको प्रोवाइड किया है, दैट वुड बी अ हेल्थ केयर सर्विस. Healthcare service, what include healthcare services by way of transportation of the patient to and from a clinical establishment. मतलब जो हेल्थ केयर सर्विसेज में इंक्लूड क्या किया है, आपका क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट तक लाने और वहां से ले जाने तक जो भी आपने किया है वो सब हेल्थ केयर सर्विसेज है. बट एक्सक्लूड्स व्हाट, जो बर्थ डिफेक्ट्स हैं उसको एक्सक्लूड किया है. सर ने कहा था अभी जब क्वेश्चन क्रिएट किया उसमें परवाल सर ने, तो उसमें क्वेश्चन था कि वो जो पर्सन है दैट वाज इंजर्ड एंड उसको सर्जरी से गो थ्रू होना पड़ा, प्लास्टिक सर्जरी से इंजरी थी, वो वाला केस भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. हेयर ट्रांसप्लांट्स और कॉस्मेटिक्स और प्लास्टिक सर्जरी वुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द हेल्थ केयर सर्विसेज. बट what are included? If hair transplant or cosmetic or plastic surgery are undertaken to restore or to reconstruct anatomy or functions of the body affected due to congenital defects, development abnormalities, injury or trauma. अगर किसी इंजरी, ट्रोमा, डेवलपमेंट एबनॉर्मलिटीज और बर्थ डिफेक्ट के वजह से आपने उसको रिस्टोर करने के लिए अगर कोई ट्रांसप्लांट, कॉस्मेटिक या प्लास्टिक सर्जरी दी है, दैट वुड बी इंक्लूडेड इन हेल्थ केयर सर्विसेज. रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन इंडिया कौन से हैं? एलोपैथी, योगा, न्यूरोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथिक. उस पर्सन ने योगा भी ट्रीटमेंट लिया तो योगा is also a recognized medical system of India and hence this service is also exempt from GST. What are the clinical establishment? As per definition 2 clause S of the notification number 12/2017 CT rate, clinical establishment means a hospital, nursing home, clinic, sanatorium or any other institute by whatever name called that offers services or facilities requiring diagnosis or treatment or care for illness, injury, deformity, abnormality, pregnancy in any recognized medical system of India, or any place establishment as an independent entity or a part of establishment to carry out diagnostic or investigate services of disease. Authorized medical practitioners are also defined. A medical practitioner registered with any of the council of the recognized system of medicines established or recognized by law in India and includes a medical professional having the requisite qualification to practice in any recognized system of medicine in India as per the law for the time being in force. मतलब कोई भी जो मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट, रिकॉग्नाइज मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट अंडर द लॉ ऑफ इंडिया है, उसमें जो मेडिकल प्रैक्टिशनर रिकॉग्नाइज्ड है या रजिस्टर्ड है वो सब ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है. पैरामेडिक्स इज नॉट डिफाइंड इन द जीएसटी लॉ, बट एज पर द जनरल मीनिंग पैरामेडिक्स आर ट्रेन्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, दैट इज नर्सिंग स्टाफ, फिजियोथेरेपिस्ट, टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट एक्सेट्रा. कौन कौन सी सर्विसेज एग्जाम है हमारी? हेल्थ केयर सर्विसेज बाय ए क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट और बाय ए ऑथराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और बाय ए पैरामेडिक्स. Then other service which is exempt by clause B is transportation of the patient in an ambulance other than those specified in above. जो transportation of service है by any person to any person. So transportation of patient in an ambulance is also a exempt service. Entry number 75 है services provided by operator of
common biomedical waste management facility to a clinical establishment by way of treatment or disposal of biomedical waste or processes incidental thereto. ये भी exempt है. Preservation of stem cells or any other services related to such preservation, that is also exempt. Healthcare services of animals and birds. वेटरनरी जो क्लिनिक है, अगर किसी भी पर्सन को जो सर्विसेज देता है, that are also exempt as per the entry number 46 of notification number 12/2017. That means वो जो डॉग था उसको जो वेटरनरी क्लिनिक में जो सर्विसेज थी, that was also exempt. Entry number 74A of the notification number 12/2017, that means rehabilitation, therapy or counseling and such other activities. Rehabilitation जो प्रोफेशनल्स होते हैं, these are recognized by the Rehabilitation Council of India. वो जो सर्विसेज देते हैं किसी भी पर्सन को, any person at medical establishment, educational institution or rehabilitation center, that service is also exempt from tax. COVID-19 में जो GST rates थी mask, but these mask sanitizers are also taxable. In tax rates are on the cosmetic, plastic surgery it is 18%, drug and medicines for the personal use is 12%. Now, overall impact of GST at a medical healthcare industry is medical GST on the medical services, healthcare services provided by a medical practitioner, licensed medical or paramedical clinic is exempt from GST. GST on hospitalization, all such medicines and supplies used at the time of hospitalization for an individual is exempt from GST, and sale of medicines will be taxable as per the GST rate mentioned in the GST law, such as NEL 5%, 12% or say 18%. Now we sum up our session, and thank you. Ma'am, should we wait for any queries for 1 or 2 minutes? Sure, Or sure. we conclude? Yeah, we can have the queries. If you have any queries, then please let us know in chat box. There is no queries. I think all queries have been resolved. Right? If anyone wants to have this PPT, then we can share also. Yes. Okay, so should we conclude? Ma'am, should we conclude? Yeah, sure. So now I request to see Rajiv Gupta, sir, Treasurer of CIRC, for delivering the vote of thanks. Please, sir. Thanks, ma'am. हर बार की तरह इस बार भी आज का दिन जो GST पाठशाला का था बहुत अच्छा रहा, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा CIRC की तरफ से अपने आज के लर्नर स्पीकर मैम CA शिवली खंडेलवाल जी का। मैंने खुद भी ऐसा नहीं है मैम, करीबन मैंने आपका 60-70% मैंने भी पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन सुना आपका, तो बहुत ही यूजफुल रहा। बहुत अच्छे तरीके से आपने बढ़िया तरीके से पीपीटी के माध्यम से भी डिटेल्स में भी और शॉर्ट में भी आपने बताया। मेरे पास अभी एक हमारे डिपार्टमेंट के भी एक बंदों ने ज्वाइन किया हुआ है आपको ये सेमिनार, तो उनका व्हाट्सएप में था मेरे पास अभी मैसेज के साथ, पीपीटी जरूर भेजिएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना पीपीटी हमें शेयर कर दें अभिलाषा मैम को या CIRC टीम को, जिससे कि हम यूजर को उसे भेज सकें। मैम बहुत फिर से एक बार आपका थैंक्स कि आपने समय निकाला और इतने अच्छे तरीके से, और आगे भी हम CIRC के लेवल पर आपकी सेवाएं देते रहेंगे। साथ ही साथ मैं थैंक्स करना चाहूँगा आज के मॉडरेटर अभिलाषा मैम का, जिन्होंने बहुत बढ़िया सुंदर तरीके से इस पूरे प्रोग्राम को हैंडल किया, और हमारी पूरी टीम जो बैकएंड में भी काम कर रही है, और साथ ही साथ हमारे व्यूअर्स
जिन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी बातों को सुना। और सबसे अच्छी चीज यही होती है मैम कि बहुत अच्छे तरीके से चीज को एक्सप्लेन किया जाता है, तो उसमें डाउट्स जो है ना वो अपने आप रिजॉल्व होते चले जाए। तो आपका जो प्रेजेंटेशन है उसका सभी को फायदा मिलेगा, मुझे भी, बाकी मेंबर्स को भी। तो एक बार फिर से आपका धन्यवाद। इसके साथ मैं आगे ओवर टू अभिलाषा मैम और कंक्लूड। Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much, Shilvi ma'am. On behalf of CIRC of ICAI, thankful to you for giving your precious time and sharing your knowledge with us. I also want to thank C. Virendra Parwal sir, who shared his knowledge with us. Thank you so much, C. Rajiv Gupta sir, C. Atul Mehrotra sir, and all the viewers and all the participants who joined us and kept their support till the end. Thank you so much, everyone. Thank you.